Hello everyone. Hi. Hope you guys can see me and hear me clearly. It's got a little bit late. I was trying to connect to internet. Restarted my modem. Good evening, Nan. Good to see you here. If you guys can see me and hear me clearly, please write a hi or a hello or something in chat so that I know the session is now live. Welcome, Nan. Welcome to the class. Okay, Nan. Now, in these classes, my agenda has been पिछले कुछ काफ़ी दिनों से मतलब आई थिंक पूरे जुलाई के महीने मैंने ज्योमेट्री पे ही फोकस किया है और ज्योमेट्री की ही कहानी आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे. पॉलीगन्स के बारे में मोस्टली डिस्कस करेंगे. अ लिटिल बिट ऑफ एरिया एज वेल. गुड इवनिंग अविनाश, गुड टू सी यू हियर. तो सबसे पहले जो लोग शायद पहली बार मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम रवि हांडा है. पिछले 15 साल से मैं कैट के लिए पढ़ा रहा हूं. मैंने पढ़ाना चालू किया था अपना वेबसाइट पे handagafunda.com और उसके थ्रू मैंने 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया है और अब मैं कम्प्लीटली अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कब मेरी कौन सी क्लास कहाँ कैसे हो रही है तो उसके लिए आप कैट प्रेप ऑनलाइन हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ओवर एंड अबव दैट मैं जो अनअकैडमी के ऊपर क्लासेस ले रहा हूँ, गुड इवनिंग ऋषभ, मैं जो अनअकैडमी के ऊपर क्लासेस ले रहा हूँ वो क्लासेस दो टाइप से लेता हूँ मैं, प्लस एज वेल एज आइकॉनिक. तो जो प्लस वाली क्लासेस हैं उन क्लासेस के अंदर क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है. पहले ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहता है. आइकॉनिक वाली जो क्लासेस हैं उनमें आपको वो सब तो मिलता ही है जो कि प्लस में है, बट उसके अलावा आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम टॉप बी स्कूल ग्रेजुएट्स. सो बेसिकली आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, इन सब कॉलेजेस के जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं प्रिपेयर करने में. आप उनके साथ में अपना स्लॉट वगैरह बुक कर सकते हैं और फिर वो आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स को प्लान करें, कैसे आप अपनी स्टडी प्लान करें. वो सारी डिटेल्स वो आपसे शेयर करेंगे. मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि आप 6 मंथ्स वाला जो प्लान है 16,400 का वो लें, क्योंकि तब तक कैट हो ही जाएगा, तब तक ज़ैट भी हो जाएगा और उतना टाइम काफ़ी है पूरा कोर्स को ख़त्म करने के लिए. और इसके लिए आप हांडा कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये तो होगा अपना प्लस वाले प्लान के लिए. और अगर आप चाहते हैं कि आपको वो लाइव मेंटरशिप भी मिले फ्रॉम टॉप बी स्कूल ग्रेजुएट्स तो आपको आइकॉनिक प्लान लेना चाहिए जो कि 25,800 का पड़ेगा. तो चलिए, अगर आप लोग तैयार हैं जस्ट हाय हेलो यस कुछ लिख दें चैट विंडो में सो दैट वी नो यू आर ऑन पॉइंट एंड देन वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन. Let us go ahead. So, what is indeed a polygon? A polygon is a closed figure bound by 3 or more straight lines known as sides. उसमें n vertices होंगे, n sides होंगी. जो भी vertices हैं वो 3 vertices कोलिनियर जो हैं वो नहीं हो सकते. A line joining 2 non-adjacent vertices is known as a diagonal. तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशंस हो गई जो कि आई होप कि आपको पता होंगी. बेसिक सवाल जो आ जाते हैं कि एक पॉलीगन में अगर n साइड का पॉलीगन है तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे. तो ये मैं कैसे निकालूं, मेरे को मान लो A B C D E F. आप चाहो तो इसमें काउंट कर सकते हो, आप चाहो तो इसके अंदर काउंट कर सकते हो, बट मेरे को काउंट नहीं करना है, मेरे को इसको देख के बताना है कि इसमें कितने डायगोनल्स होंगे. तो मैं ये कैसे निकाल सकता हूं, कोई आइडिया? आंसर मैंने आपको दे ही रखा है आपकी स्क्रीन पे, n इंटू एन माइनस 3/2. कैसे आंसर आएगा, ये कुछ सजेशन हो तो मेरे को चैट में बताइए. चैट में कुणाल कुमार पूछ रहे हैं, इज MBA वर्थ इट एज अ फ्रेशर? As most of the MBA grads in top companies say, it's preferred with few years of experience. Well, it depends कुणाल कि तुम्हारा कौन से कॉलेज में एडमिशन हो रहा है. अगर एज अ फ्रेशर तुम्हारा
किसी भी टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो बिना सोचे समझे चले जाओ, बिना सोचे समझे चले जाओ। तुम कोई भी टॉप 10 कॉलेज अगर तुमको मिलता है तो, क्योंकि ये तुम्हारे टैलेंट का प्रूफ हो जाएगा। भाई क्यों कंपनीज, ये बात एकदम सत्य है कि कंपनीज जो हैं वो एक्सपीरियंस वाले लोगों को प्रेफर करती हैं, 100% ट्रू। पर क्यों करती हैं? इसलिए करती हैं क्योंकि उनको ये पता रहता है कि हाँ यार ये 2-3 साल काम करके आया, इसमें थोड़ी अकल होगी, इसको काम कैसे करते हैं वो आता होगा। बिकॉज दे वॉन्ट स्मार्ट पीपल, बिकॉज दे वॉन्ट बेस्ट पीपल। बट अब ये सोचो, एक कोई आदमी है जो कि एक टॉप 10 भी स्कूल के अंदर एज अ फ्रेशर घुस गया, कितना टैलेंटेड आदमी रहा होगा वो। आसान नहीं है एज अ फ्रेशर जो है तुम टॉप 10 भी स्कूल में घुस जाओ, बट अगर कोई आदमी घुसा है एज अ फ्रेशर तो वो गजब टैलेंटेड आदमी रहा होगा। मेरे को अगर ऐसा कोई कैंडिडेट मिलेगा जो कि एज अ फ्रेशर किसी अच्छे, मतलब आई एम बैंगलोर, आई एम कलकत्ता में घुसा है या आई एम अहमदाबाद में घुसा है, तो गजब टैलेंटेड आदमी रहा होगा, मैं तो उसे पक्का अपनी कंपनी में लेना चाहूँगा। पर यही सवाल उल्टा पड़ जाता है अगर मैं जाता हूँ IIT गाजियाबाद। अगर मैं एज अ फ्रेशर IIT गाजियाबाद जा रहा हूँ तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यार 1 साल और देके देख लो, थोड़ा काम करके उसके बाद में देके देख लो। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपका IIT गाजियाबाद होता है, तो मेरे हिसाब से IIT गाजियाबाद आपको तभी जाना चाहिए जब आपको पता है कि यार इससे बेटर मेरे बस की बात नहीं है। भाई आदमी को अंदाजा लग जाता है कि यार मेरी इस बार 92 93 आ गई, अगली बार मैं और मेहनत करूंगा तो 94 95 आ जाएगी, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे। पर अगर तुमको लगता है नहीं मेरी इस बार 92 93 आई है, IIT गाजियाबाद हुआ है, अगले इस साल तो मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, ऐसे ही उठ के पेपर दे दिया था, मेरी नौकरी जो है वो याहू के अंदर लग गई है, गूगल में लग गई है, मैं अभी 1 साल वहाँ पे काम करूँगा, वर्क एक्स भी बनेगा मेरा, मैं अगले साल मेहनत करके नंबर भी और ले आऊँगा, तब तुमको दोबारा देना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब कि दे प्रेफर इट विद फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली यस, दे डू, कंपनीज डू प्रेफर कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस because they are better candidates in more often than not. But if you are coming from a top B school, then if you get into a top B school in your first attempt as a fresher, please go ahead and join it. Anything in the top 10 as a fresher is absolutely fine. Kunal, I hope I have answered your question. And now I want you guys to answer my question. ये n into n minus 3/2 आया कैसे? कोई भी मुझे इसके बारे में कुछ भी हिंट दे दो। तो देखो, मान लो ये पॉइंट में लेता हूं ए से मैं कितने डायगोनल बना सकता हूं? मेरे ए से मैं एफ पे नहीं बना सकता, और ए से मैं बी पे नहीं बना सकता, और ए से मैं खुद पे नहीं बना सकता। यहां तो मेरे को दिख रहा है कि 6 साइड्स है, मगर अगर n साइड्स होती तो मैं, मान लो मैं ए हूं, मैं खुद से नहीं बना सकता, मैं अपने लेफ्ट वाले पॉइंट से नहीं बना सकता, मैं अपने राइट वाले पॉइंट से नहीं बना सकता, तो मैं 3 लोगों के साथ में डायगोनल नहीं बना सकता। तो मैं कितने डायगोनल बना सकता हूं? मैं n-3 डायगोनल बना सकता हूं। हर वर्टेक्स अपने साथ में नहीं बना सकता, अपने राइट वाले के साथ में नहीं बना सकता, अपने लेफ्ट वाले के साथ में नहीं बना सकता। हर वर्टेक्स n-3 डायगोनल बना सकता है। ये एक तरीका है। तो मैं कोई स्पेशल तो हूं नहीं। अगर मैं n-3 बना सकता हूं तो b कितने बना सकता है? n-3। c कितने बना सकता है? n-3। f कितने बना सकता है? n-3। तो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे के सारे वो n-3 बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे n-3 इंटू n। पर आप आंसर अगर देखोगे तो एक 2 से डिवाइड कर रखा है। क्यों कर रखा है डिवाइड? भाई मेरे n-3 डायगोनल, b के n-3 डायगोनल, c के n-3 डायगोनल, तो सबके n लोग हैं। हर एक आदमी के पास में अगर मतलब n-3 डंडे हैं तो टोटल डंडे कितने हुए? n इंटू n-3 डंडे हुए। भाई डायगोनल वाली भी बात है। तो मैं 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं? Why am I dividing by 2? अविनाश कुमार इज एब्सोल्युटली राइट कि देखो ये डंडे वाला केस नहीं है कि मेरे पास में 3 डंडे हैं, उसके पास में 5 डंडे हैं। दिस इज अ केस लाइक अ हैंडशेक। अगर ए और ई हैंडशेक कर रहे हैं तो वो हैंडशेक ए के हैंडशेक्स में भी गिना जाएगा और ई के हैंडशेक्स में भी गिना जाएगा। वैसे ही अगर ए टू डी ये डायगोनल मैंने खींचा
तो ये डायगोनल ए में भी गिना जाएगा, ये डायगोनल डी में भी गिना जाएगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी n-3 इंटू n डिवाइडेड बाय 2। ये होता है रीजनिंग या फॉर्मूला ये देखने का कि इसमें कितने डायगोनल्स होंगे। एक और तरीका अब मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि मान लो n पॉइंट्स हैं, इन n पॉइंट्स में से तुम कोई भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट करो, इन n पॉइंट्स में से तुम कोई भी 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करो, तो वो कितने तरीके से तुम कर सकते हो? वो तुम कर सकते हो nc2 तरीके से। nc2 कितना होता है? n इंटू n-1/2। तो मेरी लाइनें कितनी बनेंगी भाई? मेरे को एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो मेरी नंबर ऑफ लाइंस अगर मैं आपसे पूछता हूं तो वो हो जाएंगी nc2, एंड इफ nc2 इज द नंबर ऑफ लाइंस दैट वी हैव, देन what is the number of sides that I will have and what is the number of diagonals that I will have। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, एक हो गया साइड्स और एक हो गया मेरा डायगोनल। साइड कितनी है? साइड तो n साइडेड पॉलीगन है तो n ही है, तो डायगोनल्स कितने होंगे? तो मेरे डायगोनल्स होंगे n इंटू n-1/2, इसमें से n को निकाल दो, तो ये हो गया n² माइनस n माइनस 2n/2, तो ये हो गया मेरा n² माइनस 3n/2, तो ये हो गया मेरा n इंटू n-3/2। ये आ गई मेरी वैल्यू। आर यू गाइस ओके विद दिस? n इंटू n-3/2। और भी बहुत तरीके हैं, ये एक और तरीका मैंने आपको यहां पे दे रखा है, ये मैंने चिपका दिया भाई। बेसिकली पहले वाले से बनेंगे n-3, दूसरे वाले से बनेंगे n-3, तीसरे वाले से बनेंगे n-4, n-5, ऐसे करके आप बनाते जाओ तो भी आपका n इंटू n-3/2 आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। वो लंबा मेथड था, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरी पीडीएफ में था तो मैंने उठा के डाल दिया। अब बताइए ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है ये कितना होगा? ये होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। कोई मुझे बता सकता है कि क्यों? मैं फिर से एक अपना पॉलीगन बना लेता हूं। मान लो ये मेरा पॉलीगन है, तो इसके जो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स है ये जो होगा ये होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्यों होगा? क्या लॉजिक है? इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं? क्या तकनीक मैं इसके लिए लगा सकता हूं? एनी आइडियाज, एनी सजेशंस? क्या कर सकता हूं मैं इसके लिए? देखो मल्टीपल तरीके हैं। फिर से सबसे आसान तरीका जो कि मेरे को पसंद है वो है कि भैया मैं इसके बना लेता हूँ डायगोनल। वो डायगोनल्स के थ्रू मैंने इसको डिवाइड कर लिया ट्राइंगल्स में, तो 1 2 3 4 ट्राइंगल बने, तो इसका सम हो गया 4 इंटू 180 डिग्री। अगर मान लो मैं कोई और फिगर लेता हूँ, ये तो 6 वाला लिया था, मान लो मैं एक ऑक्टागन ले लेता हूं। ऑक्टागन के अंदर क्या होगा? बनाओ ट्राइंगल्स, या बनाओ डायगोनल्स। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने बने? 6 इंटू 180 डिग्री। बेसिकली अगर मैंने 5 डायगोनल बनाए तो 6 ट्राइंगल बने। अगर मैंने 3 डायगोनल बनाए तो
4 ट्राइंगल बने। एक पॉइंट से एक n साइडेड फिगर में, एक पॉइंट से एक n साइडेड फिगर में मैं कितने डायगोनल बना सकता हूं? एक पॉइंट से हम लोगों ने निकाला था कि मैं n-3 डायगोनल बना सकता हूं। सो इफ आई कैन मेक फ्रॉम वन पॉइंट n-3 diagonals, that means I can make n-2 triangles, and if I can make n-2 triangles, the sum of the interior angles will be n-2 into 180 degrees. Are you guys okay with these values? n-2 into 180 degrees. Let me know if you have an issue with this, any value or any confusion with any of these values. I'll happily explain this again. Avinash, Kunal, Rishabh, hope you guys are okay with this. Okay, let's go ahead. Let me just explain another method by which you can do this. Suppose this is my polygon which is there. तो इस पॉलीगन के अंदर ये एंगल थीटा है, ये थीटा 1 है। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 माइनस थीटा 1। अब मान लो मैंने ये दूसरा ट्राइंगल बनाया और यहां पे लिया थीटा 2, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 माइनस थीटा 2। ऐसे ही 180 माइनस थीटा 3, ऐसे ही करता रहूंगा, मैं आगे चलता रहूंगा। और अगर मैं इसको ऐसे ही आगे लेके जाता रहूंगा तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा? भाई n बार आएगा 180 180 180 180, तो ये तो हो जाएगा 180 n, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, ये पूरा का पूरा हो जाएगा सर्कल, तो माइनस 360। तो फिर से ये कितना आ गया? 180 इंटू n माइनस 2 आ गया, वही मेरा आंसर हो जाएगा, n इंटू 180 माइनस 360 डिग्री। चलिए अब मुझे बताइए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन का बहुत ही फटाफट आप मुझे आंसर दे सकते हो। सो कैन यू लेट मी नो व्हाट द आंसर्स विल बी फॉर दीज वैल्यूज? कैन यू लेट मी नो व्हाट द आंसर्स विल बी फॉर दीज वैल्यूज? What is each interior angle of a regular polygon, each exterior angle of a regular polygon, ratio of the number of sides to diagonals? Ratio of number of sides to diagonals. How do I find that out? Avinash is right for the interior angle. भाई मेरे को टोटल इंटीरियर एंगल पता है कि n-2 into 180 डिग्रीज होता है. What is a regular polygon? Regular polygon is a polygon in which all sides are equal and all angles are equal. अगर मैं आपको बोल दूं कि सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा? नहीं. अगर मैं आपको बोल दूं कि सारे एंगल्स इक्वल हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा? नहीं. इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि रेगुलर पॉलीगन के लिए आपके ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए. क्योंकि अगर मैं बोलूं कि खाली साइड्स इक्वल हैं तो 4 साइड्स अगर हैं तो रोम्बस के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं. क्या वो रेगुलर पॉलीगन है? नहीं है. अगर मैं आपको बोलूं कि खाली एंगल्स इक्वल हैं तो रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. क्या वो रेगुलर पॉलीगन है? नहीं है. मेरे को ये दोनों चीजें चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों चीजें होंगी, साइड्स बराबर एंगल्स बराबर, तब मुझे मिलेगा स्क्वायर, और वो होगा एक रेगुलर पॉलीगन. वो होगा एक रेगुलर पॉलीगन. नाउ व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री, so this will be 360 degree.
by n, रेगुलर है तो सारे बराबर होंगे. रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स टू डायगनल्स, तो मेरा नंबर ऑफ डायगनल्स होता है n इंटू एन माइनस 3/2. नंबर ऑफ साइड्स से इसका रेशियो लेना है तो मेरे को लेना होगा n इज टू एन माइनस 3/2. तो n कटा तो ये होगा 2 इज टू एन माइनस 3. आई कैन सी अविनाश ने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, बट दिस इज द फंडामेंटल आइडिया ऑफ पॉलीगन्स. थोड़े से एक आध हम लोग बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं. मान लो मैंने तुम्हें बताया कि इंटीरियर एंगल है 150. ईच इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का है 150. तो कितनी साइड्स होंगी उसमें? कैन यू टेल मी दैट? Each interior angle of a polygon is 150. Then what is the number of sides that it has? How do I find that out? How do I calculate it? Any ideas or suggestions for this? How can I figure this out? How do I get to the answer here? Number of sides of a regular polygon with each interior angle of 150 degrees. Of 150 degrees. How do I calculate this? How do I find this out? How do I get this value? So what you do is, each interior angle of a regular polygon is n minus 2 into 180 degrees divided by n, and that is given to me as 150 degrees. Just solve this equation out. So this is 180n minus 360 is equal to 150n. So 30n is 360. So number of sides is 360 by 12. Sorry, 360 by 30, which comes out as 12. That will be my answer here. Now, this is a proper question. This is from IIFT 2008. Please try this out and tell me what will be your answer for this one. How are you going to calculate this? How are you going to find this one out? The interior angle of a polygon are in AP. The smallest is 120. So the next one will be 125, the next one will be 130, and so on. You have to find out the number of sides in the polygon is how many. Is it 7, 8, 9, or none of the above? Which one is this? Which one is this? Let me show you the proper way to do this. After the proper way, I'll show you how to actually do it in the exam. So the proper way to do this is, you have 120, 125, 130, and this list will go on till n terms. What will be the nth term? The nth term will be 120 plus n minus 1 into d. Now, what is the sum of all of these angles? It will be n by 2 because n terms are there, into first term plus the last term. So that is 120 plus 120 plus n minus 1 into 5. We also know that sum of the interior angles for a polygon is n minus 2 into 180 degrees. So we have an equation in n. Now I'll try and solve this equation. So this is n into 240 minus 5, so 235 plus 5n is equal to how much? Is equal to 180n. Sorry, this 2 goes to the other side. So is equal to 360n minus 360.
which will mean, or rather what I can do is I can take 5 common. So I will be left with n square plus, how much is this? 235. 250 would have been 50. So 47 is equal to, if I take 5 common from here, what am I left with? N square plus 47n. If I take 5 common from here, I'm left with 72n minus 72. So what is my equation? N square, 5 and 5 cancels, 47n minus 72n. I think I've made a calculation mistake somewhere. 120 plus n minus 1 into 5 is the total. That is n minus 2 into 180 degrees. That is 360. So n minus 2 into 180, that goes there. That becomes 360n minus 360. What mistake have I made? First term plus last term. 120n n square. Okay, I'm making some calculation mistake here. Let me check. 272. I think I've made some calculation mistake here. I'll just try to, do it again. So, what is the sum? Once again, so it's 120, 125, 130. So 120 is appearing in it n times. And then you have 5, which is 1 plus 2 plus 3 till n minus 1, which is equal to n minus 2 into 180 degrees, which is 120n plus 5 times n into n minus 1 by 2, because it is n minus 1 and the next term will be n, which is equal to n minus 2 into 180 degrees. Now I think I can take, this becomes 240n plus 5n square minus 5n is equal to 360n minus 720, because 2 into 180 is 720 into 2. So this gives me 5n square. I bring the n's to this side. So 240 minus 360 is 120. So minus 125n plus 720 is 0, which is n square minus 25n plus 144 equal to 0. Yes, that means n minus 9 or n minus 16 is 0. So this gives me the value of n as 9 or 16. And I have 9 in the options. So 9 will be my answer. But as you might have realized by now, this took a lot of time and effort. I even made a calculation mistake in this. So that's why this is not the method that I'm going to follow in the exam. What am I going to do in the exam? I'm going to look at these values. When I look at these values, I know that my options are from 120, 7 terms. So it will be from 120 till 150. That's option 1. What is option 2? 120, 125 till one more, so it goes till 155. And what is option 3? Option 3 is 120, 125 and it goes till 160. So now for 7, what is the sum? This is n by 2
7 terms, 7 by 2, first term plus last term. So 270 is equal to n by n into n minus, n minus 2. So this is n minus 2 into 180 degrees. Now, are these equal? No, I have a 7 on the left and there is no multiple of 7 on the right. So this is not the answer, because this relationship was incorrect. This will give me 8 by 2 into 275 should be equal to 6 into 180. Is this valid? Once again, no, this is not valid, because here this is a multiple of 9. My left hand side is not a multiple of 9. My left hand side is not a multiple of 9. How about this one? So this will be n by 2 into first term plus last term, which is 280, is n minus 2 into 180 degrees. Is this valid? Let's check. So 7 to 80, 40, 2, 40, 20, 9 into 20 is 180. Yes, this is valid. So very quickly, by just using the options, I can get the answer here. And that's what I recommend that you should also do. Definitely do on your own. Definitely do on your own. There is no point bothering about it so soon, Shen. There is no point bothering about it so soon. Now, before we go ahead, I'd like to remind you that my batch for CAT 2021 is going live tomorrow. You guys can go ahead and join that. When you do, please remember to use the coupon code HANDA. Please remember to use the coupon code HANDA. In this particular course, I will be focusing primarily on permutation and combination. That is going to be my priority. Having said that, if you are targeting CAT 22, then for CAT 22, we have multiple batches which are starting. On 10th, 17th, and another one on 21st. You guys can go ahead and join those as well. Now, coming back to the point of polygons, there is one more thing which I would like to tell you about, which is a convex polygon and a concave polygon. All the polygons that we normally consider, normally discuss, by default, when we are talking about them, we are always talking about the convex polygon. We are never talking about the concave polygon. What is the difference? Well, a convex polygon is whatever polygon you make, if all angles, or rather if none of the angles is more than 180 degree, then it is a convex polygon. However, if one of the angles is more than 180 degree, then it becomes a concave polygon. So let me give you an example. So if I do it regularly, if I make it like this is my regular convex hexagon. But if I make it like this, now these 4 angles or these 5 angles are less than 180 degrees, so that is okay. But this particular angle is more than 180 degree. So this is a concave polygon. This is my regular convex polygon. The other thing that you need to keep in mind is, what is the sum of interior angles? Does that change? No. In case of a concave polygon, the sum of the interior angles will still be n minus 2 into 180 degree. Why does it remain the same? Because the logic remains the same. What was my logic earlier? From one point, you can make n minus 3 diagonals. From one point, you can make n minus 3 diagonals. That means n minus 2 triangles. And n minus 2 triangles meant n minus 2 into 180 degree. Same logic applies. You can still make 1, 2, 3, 4 triangles, because you can still make 3 diagonals. So that remains the same. And that is why, whether it's a convex polygon or a concave polygon, your number of angles remains as n minus 2 into 180 degrees. Please try this one out. What will be your answer here? What will be your answer here? Each side of a given polygon. How will you find this out? How will you calculate this?
and get the answer. Each side of a given polygon is parallel either to the x-axis or the y-axis. A corner of such a polygon is said to be convex if the internal angle is 90 or concave if the internal angle is 270. If the number of convex corners is 25, then what is the number of concave corners? Now suppose the number of concave corners is x. Then first of all, what you need to understand is that in this, suppose these are my axes. Now, how do I make all sides are parallel? So this is my regular convex polygon. What can I do if I want to make, one angle as more than, and I still want it to be, something like this. This has one angle which is concave. This has one angle which is concave. The point that I am trying to highlight is that whatever diagram you make, since all sides are parallel to the x-axis and the y-axis, all the concave and convex angles will be 90 degree and all the concave angles are 270 degree because they will look like this. So, your polygon has n sides, out of which 25 are 90 degree, x are 270 degrees. So what equation can you use? First of all, what is your total angles? So 25 into 90 plus x into 270. This is your sum of interior angles. You can also say your sum of interior angles is n minus 2 into 180 or 25 plus x minus 2 into 180 degree. You can use this formula and try and solve this equation. So if I cancel out 90, so this is 3, this is 2. So you will have 25 plus 3x is 23 into 2, 46 plus 2x. So I get the value of x as 21 and that will be my answer. So I get the value as 21 here. Are you guys okay with this? The value as 21. Let's look at another question. So these are some other perimeter area, So hexagon is something which is a little bit important. So let me spend some more time on it. Avinash, which part? Avinash, this is what I have done. Can you tell me which part you have a problem with? What I have done here is 25 and x. So 25 is the number of convex sides or convex angles. Each of them is 90 degree. X is the number of concave angles, which is 270 degree. Sum of the interior angles, 25 into 90 plus x into 270. 25 90 plus x 270 is equal to n minus 2 into 180 degrees, which is the sum of all the angles. What is n? N is 25 plus x, and then I have just solved for x. Now, in polygons, what I've seen is that typically what happens is hexagon is something which comes in very, very handy. So I like to spend a little bit of time on hexagon. What is a regular hexagon?
A regular hexagon is nothing else but a combination of 6 equilateral triangles. So what you see here is a set of 6 equilateral triangles. Can you see that? And once you have 6 equilateral triangles, all angles are 60 degree. All angles are 60 degree. What will be its area? If the side is A. If the side is A, one equilateral triangle is root 3 by 4a square. So 6 of them will be 6 times this, which comes out as 3 root 3 by 2 into a square. Then another part which comes in very, very useful is, my diagonals. So if all of these sides are A, you have seen some of the diagonals here. So some of the diagonals, so A, D, B, E and F, C. The big diagonals are 3A. The big diagonals are 3A. Now let me try and make the other diagonals. Let me try and make the figure again. It's a regular one. It might not look that way, but other than these three, which are the big ones, which will be the other diagonals. Now, if you want to look at the other diagonals, so from A, I'm not talking about AD, AB I cannot make. So AC, AE, FB, EC, EB and FC. How much will be these? I think, sorry. FD and DB. So these will be the other ones. What will be the length of these? What will be the length of these? Can you tell me that? It's very simple if you look at the original diagram of 6 equilateral triangles to figure this part out. What is happening here is, if you join AE, I'm asking you for the value of AE. What is that? Is the height of two of them. Height for one equilateral triangle is root 3a by 2, which means these other diagonals, that is AC, AE, BD, BF and AC, AE, BD, BF, which one is left? CE is left, and so AC, AE, BD, BF, CE and FD. All of these will be root 3 times A. All of these will be root 3 times A. This is also something which comes in handy. Can you tell me the answer for this question? Perimeter of a regular hexagon with area 6 root 3. So I am given the area as 6 root 3. How do I find out the perimeter for this? How do I find out the perimeter for this? Any ideas or suggestions? For area, I know is 3 root 3. Find A. What is the area? 3 root 3 by 2 A square. So if my area is 3 root 3 by 2 A square, root 3 cancels. 3 and 6 gives me 2. So A square is equal to 4, means A equal to 2. If my side is equal to 2, then what will be my perimeter? My perimeter will be 2A or 4. And that will be my value here.
Find the in radius of a hexagon with each side of 4 units. So this is interesting. I have to find out the in radius. Suppose this is my hexagon. Now I'm drawing a circle inside it. And the circle touches all sides. And I'm asking you to give me the in radius. So how do I find that out? How do I find that out? I'm given that the side is 4 units. See, if the side is 4 units, the in radius, if you make this OAB, what will be the in radius? The in radius will be nothing else but the height of the equilateral triangle. It will be the height of the equilateral triangle. And what is the height of the equilateral triangle? Root 3 by 2 times the side. So this comes out as 2 root 3. So this is a question from CAT 2003. This is a question from CAT 2003. Does anyone know what does that L indicate? What does this L indicate from CAT 2003? Also, you can try and solve the question. Also, you should try to solve the question. Leaked. Avinash, absolutely right. So, in 2003, the paper leaked. So, people were allowed to, people were asked to attempt the paper again. The paper got leaked in 2003. I think that's the only time it has been leaked. They moved online in 2009. So, the option of leaking wasn't really there anymore. But how will you find the answer for this one? How will you find the answer for this one? Any ideas, any suggestions? See, it's pretty simple, pretty straightforward. What you need to realize is, suppose, join FC. So these are my equilateral triangles. Just suppose that I take this as OF as A. If OF is A, then this is also A, which means side of the equilateral triangle is 2A. Side of the equilateral triangle is 2A. Now, if you think about it from the area perspective, if the area for this is X, then AOF is half of the equilateral triangle. So, the area of an equilateral triangle is 2x, and if the area of the equilateral triangle is 2x, the area of the complete thing, the area of the complete hexagon is 6 into 2x or 12x. So hexagon is 12x. My figure is x. So x by 12x, 1 by 12 will come out as the answer here. Simple, straightforward question, did not require too much effort, to be honest. This is a question from the retest. So these guys knew they asked similar sort of questions. You have to find out the area of ACE to the area of the hexagon ABCDEF. So now I know, once again, I'll apply the same thing, or, if this is X, this is X, X. So any triangle will be 2x. It is getting divided into two equal parts. So x. Any equilateral triangle is 2x. ACE. So ACE has 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ACE is 6x. My total is 12x. So the required area that I'm looking for here is half, which is option 2. And that's the answer here.
Now, there are some final points which I like to, summarize at the end of polygons, because tomorrow what we'll be doing is we will be discussing CAT questions which have come on polygons, triangle, polygons, square, rectangle, hexagon, all of those. So for a fixed perimeter, the area of a polygon with a higher number of sides will always be more than the area of a polygon with the lesser number of sides. Basically, if you keep on increasing if the perimeter is constant and if you keep on increasing the sides, then the area will keep on increasing. So if you have an equilateral triangle, square, regular pentagon, regular hexagon with the same perimeter, regular hexagon will have the max area. And suppose this leads me to an interesting idea or the question, which is that if you actually are given a rope and you are asked to make any figure, what figure will you make such that you cover maximum area? It will not be a triangle or a square or a rectangle. You'll end up making a circle. This is the reverse, that for if the area is fixed, so here what was fixed? Perimeter was fixed. So to maximize, increase the number of sides. Here, if the area is fixed, then for the perimeter, you will need to minimize the number of sides. A regular polygon with the lesser number of sides. So if a rope is given and you are, an area is given, then and you need to suppose, make it the least possible, the perimeter, then you will make it as an equilateral triangle. For example, if the circumference of a circle, no, I think I said that wrong. Yes, I think I said that wrong. Anyways, I think I'll just read up what is given. For any fixed area, perimeter of a regular polygon with the number of sides will always be more, with lesser number of sides will be more than that of a polygon with a greater number of sides. If the circumference of the circle is same as the perimeter of a regular polygon, then area of the circle will be more than the area of a polygon. For a fixed area, perimeter of a regular polygon will always be greater than the circumference of the circle. Basically, the point is, I think if you can just remember this, that if you are given a rope for maximum area, you need to draw a circle. Everything else will follow from that. Okay, so that brings me to the end of today's class. Just a reminder, tomorrow's class will be very, very important, where we will be discussing previous year questions that have been asked in the CAT exam on polygons. After that, we are going to follow up with circles. Special classes every Tuesday, Thursday, Saturday. I'm taking a special class on LR and DI. There is one today as well. For that, you need to download the Unacademy app and you will find the class over there. Mensuration. August. This is for July. Mensuration will be after this. Coordinate will be after this. In case you find any sort of inappropriate content in any of the videos, you can report it with the link which is given in the description. And another link in the description is for class 12 students. We have launched a new channel called Crack Management Exams. We conduct a scholarship test every Sunday. You can use coupon code HANDA to unlock that particular scholarship test. And Unacademy also has an Ask a Doubt feature, where all you need to do is click a picture, send it to us. Either me or someone from our team will clarify that doubt for you. For registering for any course, my batch is starting, so you can do that. You can use the coupon code HANDA in that. And I hope you guys enjoyed this, learned something today. If you did, please don't forget to like this video. The more likes we get, the more classes, free classes, I will be allowed to take on YouTube. So I urge you to please do that. And on that note, I'll end today's class. I hope to see you guys in my 7 p.m. class on LR and DI. Bye everyone. Bye guys.